In 1984, Western nations began supporting the Mujahideen to dislodge the occupying Soviet forces from Afghanistan. In several of the madrasas, they found ready candidates willing to wage jihad against the occupiers. After the Soviets were forced out, these select madrasas continued to produce fighters, giving birth to the Taliban, who took control of Afghanistan. Very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. After the events of 9/11, international media and world leaders were quick to blame various terrorist groups like Al-Qaeda and the Taliban. Since the Taliban came out of madrasas, these schools immediately came into focus as training grounds for producing terrorists and violent extremists. There are hundreds of thousands of madrasas worldwide, and in Pakistan alone there are 40,000. But only a handful of these madrasas were actually involved in such extremist activities. With the exception of these few schools, madrasas continue to impart Islamic education as well as teach secular subjects. There is little evidence that they are involved in training any extremist elements or have the capability to do so. Although a madrasa is basically simply a place for Islamic learning, hard as it is for many people to believe, but the majority sect in Islam, the so-called Ahl Sunnat wal Jamaat, the Sunni sect, has always been condemning suicide bombings and this sort of thing. हमारे दारुल का ख़ास तौर पर इम्तियाज़ रहा है कि हमारी ये तबीयत नहीं है, हम दीन की बात हर मौके पे पहुंचा देते हैं, लेकिन सलीक़े से लड़ना झगड़ना और अपनी बात को मनवाने पर ज़ोर लगाना, ये हमारा मिजाज नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये नहीं बताया और हम दीन के एतबार से भी इसको यही समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी इतनी है कि हम मुनासिब अंदाज से रहनुमाई कर दें और अपने अमल को सही करने की फ़िक्र करें। When the Afghan Jihad happens, and it suits certain parties to use young men against Russia and to use young men against the growing influence of Iran. So that's when the classical tradition of Islamic learning begins to be tampered with. And what happens out of this is you've got these young kids who've memorized the Quran. They haven't a clue as to what it means because they've memorized it in Arabic. Their first language is Urdu. They're not taught enough Arabic to understand something as sophisticated as the Quran. दरस निज़ामी जो इस्लामी उलूम की आला तालीम का इदारा है, उसमें तमाम इस्लामी उलूम पढ़ाए जाते हैं, जिसमें अरबी ज़बान, उसका ग्रामर, उसका अदब। हमारे यहाँ जदीद उलूम भी हैं और जदीद तालीम भी है, हिसाब, जोग्राफिया, फ़लकियात, मंतिक़, फ़लसफ़ा, ये तमाम उलूम हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। असल हमारा मकसूद है अरबी पढ़ाने से वह 1400 साल पुरानी ज़बान जो कि कुरान की ज़बान है वो समझ में आए और हम कुरान के मकसद को, मफ़हूम को उसकी सही रोशनी में समझ सकें। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मंजूर शुदा रिकॉग्नाइज्ड है। तो अंग्रेज़ी ज़बान के ना हम मुखालिफ पहले थे ना अब हैं, लेकिन हम किसी सरकारी या हुकूमती दबाव के तहत इन चीज़ों को शामिल करने पर मजबूर नहीं हुए, बल्कि हम अपने दीनी नुक्ते नज़र से ये समझते हैं कि हर ज़माने की ज़बान होती है, हर ज़माने के लिहाज से कुछ तकाज़े होते हैं,
तो जायज़ हदूद में रहते हुए उनको इंसान इख्तियार करे और अपने मुसलमान भाइयों तक ज़्यादा बेहतर अंदाज से दीन की तर्जुमानी कर सके. So there's nothing wrong with these Islamic madrasas. In fact, they are great, in many ways, in many ways that people of all educational systems could learn from. What's wrong is that some of these institutes are extremist. They do not belong to the classical Islamic tradition. People were bound to the classical definition that this is proper jihad, these are the rules. And jihad just means struggle, So armed struggle has a place. There is a legitimate place for armed struggle, I mean, the American state is founded on legitimate armed struggle against an oppressor. So it's, the Americans should not say take jihad out of your textbooks, because their own country is based on what they describe as a legitimate armed struggle against an oppressor. So legitimate armed struggle does exist, but terror, killing of non-combatants, killing of civilians, killing of old men, women and children, this is in no way condoned by Islam. This is expressly, totally forbidden in Islam. And every Muslim knows this because they've gone through this in school, they've learned, this is a very famous, so there's no scope for misunderstanding. जहाँ ज़रूरत शमशीर की पड़ेगी और शरीयत का हुक्म अगर शमशीर चलाने का आएगा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, मगर वो आम ज़िंदगी में हमारा मौजू नहीं है. यानी इसका ये मतलब ना समझा जाए कि हम जिहाद को नहीं समझते. सही, जिहाद तो दीन का एक मुस्तकिल हुक्म है, लेकिन वो किस वक्त फ़र्ज़ होता है और कब होता है, किन लोगों पर होता है, इसकी कुछ शराइत है. जब वो शराइत पूरी हो जाएंगी तो वो शरीयत का हुक्म वो भी ज़रूरी होगा. और कुरान और हदीस ने जो मिजाज हमें बताया वो यही है कि आदमी खुश उसलूबी के साथ, हमदर्दी के साथ और पूरी वजाहत के साथ दीन की बात दूसरों तक पहुँचा दे. तो अल्लाह का शुक्र है ये मिजाज यहाँ पर बनता है और उसके मुताबिक तालीम भी हो रही है. इसी तरह दावत और इरशाद के उन्वान से कि नए माहौल में, नई ज़बान में, किसी नए माशरे में जाकर दीन का पैगाम पहुँचाया जाए और उन लोगों की शुबहात को दूर किया जाए. इस्लाम के बारे में उनको कोई इश्काल, एतराज़ हो, वो समझ कर उनको जवाब बताया जाए. तालीमी मैदान में हम काम करना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते. हमारे दारुल का पुराना एक मकसद और हमारे बुनियादी उसूलों में से एक ये भी है कि हम लोग जो है किसी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ना अपने स्टूडेंट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं.